Hello students, welcome to IIT Ashram. Today we are going to take up the new topic in organic chemistry called as haloalkanes. Haloalkanes have got numerous uses. And what is the purpose of doing or studying these chapters, you will come to know within few minutes. Haloalkanes contain halogen in an alkane part where the hydrogen atom, one of them, is removed and replaced by halogen atom. Now these haloalkanes which are there, they are present due to their resistance to get broken down into smaller particles by bacteria. But then the next part comes up. How do I really know whether it is a haloalkane or not? To know whether it is a haloalkane or not, see here, we have, say, CH3, Cl. If you see this CH3Cl, how did I get? I have got CH4. And from this, I removed one hydrogen and added one halogen, that is Cl, and I got CH3Cl. These are haloalkanes, whereby I can say that one of the hydrogen atoms is replaced by the halogen. And this halogen in a general form can be represented as CH3x or Rx. These are going to be called as alkyl, and R, which is equal to alkyl over here, can be CH3. It can be CH3 CH2. It can be even CH3 CH2 CH2, and it could be even a benzene ring also. It could be a benzene ring also. It could be a cycloalkane part. Anything it could be. So, any of these molecules or any of these alkyl groups, which could be alkyl simple or benzene or cycloalkyl or even a system of this sort which contain a halogen atom, they all are going to be called as alkyl halides. Now, what is the specialities over here? The specialities are related to the halogen which has replaced the hydrogen. And the halogen which has replaced the hydrogen can be on an sp3 hybridized carbon or on an sp2 hybridized carbon, any type. So, let me write now the different alkyl halide structures, etc. So, here, let me see here and show you. See here students, I am taking one by one. For example, CH3X, CH3 CH2X. How did I get these? I have, say, CH4. I removed one hydrogen and added one halogen. I got this. Next, the question is this halogen present on sp3 carbon or sp2 carbon? For that, we should know the hybridizations properly. Now, how do I know that part? See here, if carbon has got all 4 sigma bonds, then the carbon atom is sp3 hybridized. If the carbon
has got even one pi bond, if it has got, then that means it is an sp2 carbon. And if the carbon has got 2 pi bonds, then in that case the carbon is sp carbon. So let me see here, C, 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 C. Tell me, all of them, what is the hybridization on them? Is there any pi bond there? No. If there is no pi bond, what will you say? Is it sp3 or is it sp2 you will say? All of them are sp3 hybridized. Now if I write here C, double bond C, 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 C. Here, this carbon, what is the hybridization? Yes? sp2, good. What about this one? What is the hybridization on this carbon? It is sp2, right? Okay. Now, on this part, this one, what is the hybridization? It is again sp3, again sp3. I think you are now able to just easily recall what you have done before to identify which is sp3, sp2, etc. Now, if I am having the halogens like this, say here CH3, CH2, CHX, CH3, CH double bond C, X, CH3, CH3, C triple bond C and X. Another one, benzene, like this, and I put over here halogen. Tell me, here in the first question here, the halogen is present on sp3 carbon or is it present on sp2 carbon? Yes, it is present on which carbon? sp3 carbon. Here, present on which carbon? sp2 carbon. Good. Here, tell me students, it is present on which carbon? It is sp carbon. So, the halogen could be present on sp3 or sp2 or sp carbon. And here, tell me, what is the hybridization of this particular carbon? What is the hybridization of this particular carbon? Yes, it is sp2 carbon only. So, we are able to now check up whether the halogen atom is present on sp3 carbon or sp2 carbon or sp carbons, etc. Okay, fine. It is something looking like a classification. Yes, I wanted to tell that. But before I further jump onto the portion related to what? The classifications, I want to tell something very important. And what is that importance here? The importance says that what is the use of these alkyl halides, etc. If you check up here, the alkyl halides use I have put on the board. One of the use is going to be that these halogens which are there, they are chlorine compounds could be there, bromine compounds could be there, iodine compounds could be there, any type could be there. Now supposing I have chlorine compound, I can write CH3Cl. It could be even a bromine compound, CH3CH2Br. It could be even an iodine compound, etc. Okay. Now, if there is an iodine compound, anything, etc., students, then in that case, the question comes up here. What do they use? Chlorine containing compounds are going to be antibiotics in nature. They have antibiotic properties. And if it is going to contain some iodine and other things, that is also important.
नाउ स्टूडेंट्स, क्या होता है, कभी कभी ठंड लगती है। ठंड में अगर आपने मेडिसिन बॉटल्स देखा है तो उसके अंदर क्लोरएम्फेनिकॉल लिखा होता है, क्लोरएम्फेनिकॉल लिखा होता है। वो कोल्ड के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वही चीज हमारे को कभी कभी टाइफाइड वाले बीमारियों को भी क्योर करने के लिए या यू कैन से कंट्रोल करने के लिए हमारे को यूजफुल होते हैं। So that means so much varieties. The iodine compound which is present over here, iodine compound, जिसे कहते हैं our body produces thyroxine, and iodine compound which is there, that is going to be very very helpful for us. For example, goiter, etc. And another one is going to be chloroquinone. मलेरिया ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूजफुल होते हैं। हैलोइथेन्स होते हैं which are going to be useful for anesthetic purpose etc. For example students, अगर मेरे पास CH Cl3 है, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट। मतलब यह स्टूडेंट्स, हमारे को यह पता होना चाहिए किसी चीज को पढ़ने से पहले उसका कोई यूज है या यूज नहीं है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि क्या ये कंपाउंड हमारे शरीर को के मेटाबॉलिज्म को हेल्प करेगा या नहीं करेगा। इफ इट डजंट हेल्प द मेटाबॉलिज्म, इट मे इवन लीड टू डेथ। सो वी शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी कंपाउंड। I would say this chemistry part which you are taught, we are studying over here related to haloalkanes are very much useful in the medicinal chemistry part completely. So for that purpose I told you what all and where all can be used. Next, there is a fully fluorinated compound which is used in blood substitute and in surgeries etc. तो अब हमें पता चल गया कि हैलोएल्केन्स पढ़ना जरूरी है या नहीं है करके। क्यों मैं कह रहा हूं, क्या हम ऐसा कोई कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं या सिंथेसाइज कर सकते हैं बाद में बाय नोइंग द प्रिपरेशंस एक्सेट्रा? कैन वी प्रिपेयर सम हैलोएल्केन्स व्हिच आर गोइंग टू बी मेडिसिनली यूजफुल? यस, दैट इज व्हाट इज द रिसर्च पार्ट व्हिच वी शुड ट्राई टू थिंक अबाउट। सो नाउ, having done this part completely, let us go to the next one, that is going to be the classification of haloalkanes. Let us go for classification of haloalkanes. Now, under the heading of classification of haloalkanes, etc., under the heading of classifications, let us go for the first classification. Classification based upon number of halogen atoms. Classification based upon number of halogen atoms. There can be one halogen atom in the organic molecule. There can be two halogen atoms in the organic molecule. There can be three halogen atoms in the organic molecule, which we call them as monohalogenated compounds, dihalogenated compounds and trihalogenated compounds. Monohalogenated compounds, the first one. Example, haloethane or a monohalogenated one. Dihalogenated compound, we have got dihalogens. Trihalogenated compound, this one. Now here, in this particular classification also which we have, monohalogenated, dihalogenated and trihalogenated, I want to go for a very very important part. And what is it? See here students, I come to the monohalogenated and dihalogenated. See here, CH3, CH2, Cl. इसे मोनोहैलोजेनेटेड कहूं या नहीं? मोनोहैलोजेनेटेड कह देता हूं। लेट मी टेक अ न्यू कलर नाउ हियर। लेट मी टेक अप CH3, CH2, CH2, Br, monohalogenated. Okay, now I go for the next one,
दैट इज डाइहैलोजिनेटेड। इसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर CH3Cl मोनोहैलोजिनेटेड, CH2Cl2 डाइहैलोजिनेटेड, ठीक है, CHCl3 ट्राइहैलोजिनेटेड, एंड नेक्स्ट वन CCl4 टेट्राहैलोजिनेटेड, मोनोहैलोजिनेटेड, डाइहैलोजिनेटेड, ट्राइहैलोजिनेटेड एंड टेट्राहैलोजिनेटेड। ठीक है, अब एक और, मैं गया CH3 CH2 Cl। अब देखिए यहां पर मोनोहैलोजिनेटेड है, इसका डाइहैलोजिनेटेड लिख रहा हूं CH3 CHCl2 डाइहैलोजिनेटेड, ये भी डाइहैलोजिनेटेड है। 1 मिनट, फॉर एग्जांपल CH2 Cl CH2 Cl, ये भी डाइहैलोजिनेटेड है, दोनों डाइहैलोजिनेटेड है, मगर फर्क है, इसे हम कहते हैं जेमिनल डाइहैलोजिनेटेड कंपाउंड, इसे हम कहते हैं विसिनल डाइहैलोजिनेटेड कंपाउंड। विसिनल का मतलब एडजेसेंट, मतलब हैलोजेंस प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट carbon are called adjacent are called vicinal dihalides. They are called vicinal dihalides. Okay, students? This is about vicinal part of it. Now, I am going to take up some more dihalogen derivatives, etc. Okay, I will go for some more dihalogenated derivatives. See here, I have got CH3, CH2, CH, Cl, Cl. अब ये बताइए, ये विसिनल है या जेमिनल है? क्या है ये? यस, इट इज जेमिनल। और अब मैंने ये लिखा CH3 CH Cl CH2 Cl, this one it is vicinal. Very good. Why vicinal? Because adjacent कार्बन के ऊपर हैलोजन है, और if the halogens are on adjacent carbons, I call them as vicinal. Okay, next. अब जेमिनल के अंदर एक और CH3 Cl Cl। अब ये बताइए, ये भी जेमिनल हुआ या जेमिनल नहीं हुआ? यस, दिस इज जेमिनल। जेमिनल डायहाइड्रोजन विसिनल हुआ। अब अगर मैंने CH2 CH CH2 Cl Cl लिखा, ये जेमिनल भी नहीं है, विसिनल भी नहीं है, ये टर्मिनल है। टर्मिनल डायहाइड्स को इसे हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। अब इसी तरीके से
एक और के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और एक और के ऊपर जाते हैं स्टूडेंट्स. सम मोर एग्जांपल्स लेट अस टेक अप एंड इन दैट पार्ट सी हियर. अब मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH Cl है. जेमिनल या विसिनल? जेमिनल. गुड. ये CH3 CH2 Cl CH3 ये भी क्या है स्टूडेंट्स? जेमिनल है या नहीं है? दिस इज ऑल्सो जेमिनल. अब नेक्स्ट CH3 CH2 CH Cl CH2 Cl ये कौन सा रहा? विसिनल. ओके. ये नेक्स्ट CH3 CH Cl CH2 Cl ये विसिनल भी नहीं है, जेमिनल भी नहीं है, मगर इसे हम क्या कहेंगे? अल्फा बीटा गामा. इसे कहेंगे अल्फा बीटा. विसिनल को हम अल्फा बीटा डाइहैलाइड कह सकते हैं. अब इसको हम कहेंगे अल्फा गामा डाइहैलाइड. ठीक है. अब इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? CH2 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 Cl. इसे क्या कहेंगे? विसिनल कहेंगे, जेमिनल कहेंगे, अल्फा गामा कहेंगे या टर्मिनल कहेंगे? ये टर्मिनल है. सो टर्मिनल डाइहैलाइड्स को हम क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, few minutes back I said terminal are called what? They are called as alpha omega dihalides. इसे हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स. अब ये तो रहा अल्काइल के ऊपर क्लासिफिकेशन. अब अगर हम कहना चाहते हैं तो साइक्लिक के ऊपर भी हम इसके क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, बेंजीन के ऊपर भी हम कह सकते हैं. तो बेंजीन के ऊपर का क्लासिफिकेशंस हम कर लेते हैं अभी. अगर बेंजीन के ऊपर अगर हमारा क्लासिफिकेशन है तो बेंजीन के ऊपर का क्लासिफिकेशन लिख लो स्टूडेंट्स. ये बताओ स्टूडेंट्स, मोनो है या डाई है? मोनो डाइहैलाइड, मोनोहैलोजन. अब ये वाला डाइहैलोजन, ये भी डाइहैलोजन, और ये भी डाइहैलोजन. अब बेंजीन के ऊपर जेमिनल कभी हो नहीं सकता, बिकॉज इन बेंजीन रिमेंबर हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन हियर. एक ही हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं. वहां से आएगी. अब इसमें अब नंबरिंग करके दिखता हूं 1 2. ये क्या हो गया? 1 2 3. और ये क्या होगा? 1 2 3 4. ये है 1 2 डाइहैलाइड, और ये है 1 3 डाइहैलाइड, और ये है 1 4 डाइहैलाइड. ओके. अब इसको हम कहते हैं ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड. ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड. इसे हम कहते हैं ओके दिस वन मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड. इसे हम कहते हैं पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड. इसे कहते हैं पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड. इज दैट क्लियर? So in this way
we have done the complete classification to a large extent as to on normal alkyl groups as well as on benzene systems. Now when we have done this part, okay, let us go for some more classification. And what are those classifications going to be based upon? Those are going to be, just now I said mono, di, tri. Okay, now I am going to do it based upon the hybridization part. Based upon hybridization, the classification. So based upon the hybridization part, let us take up now, students. Now here, see this part. Let us take up the hybridizations based upon hybridizations now. Now based upon hybridizations, if I want to write CS3X, CS3CH2X, CS3CHX, CS3. Based upon what? Here everything is on sp3 hybridized center. It is based upon sp3 hybridized center. Okay. Some more. CH2 double bond CH, CH2X. It is again sp3. It is again sp3, true. But this sp3 is adjacent to sp2 carbon. इस ग्रुप को हम कहते हैं एलाइल ग्रुप. तो इसे हम कहते हैं एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड. एलाइलिक हैलाइड. अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड के ऊपर, आप देखना ये एलाइलिक है या नहीं करके. CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 Br. और एक और लिख रहा हूं मैं यहां पर CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. अब इसमें से बताइए ये पहला वाला एलाइलिक है या दूसरा वाला एलाइलिक है? कौन सा वाला एलाइलिक है स्टूडेंट्स? अब यहां पर देखिएगा कि हमें एलाइलिक के लिए ऐसा ग्रुप चाहिए, ऐसा ग्रुप. इसका मतलब ये एक एलाइलिक ग्रुप हुआ, ठीक है, और ये भी एक एलाइलिक ग्रुप हुआ. ये एक एलाइलिक ग्रुप, येलो वाला, रेड वाला एक एलाइलिक ग्रुप. तो क्या ये एलाइलिक है? नहीं, ये एलाइलिक नहीं है, बल्कि ये एलाइलिक है क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम आ गया sp3 अटैच टू sp2. ठीक है, इसे मैं दोबारा लिखता हूं स्टूडेंट्स. ये देखिएगा, आई राइट इट अगेन हियर ऑन द बोर्ड. आई राइट इट ओवर हियर ऑन द बोर्ड. सी हियर CH3 CH2 CH Br CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. ये देखिए sp3 sp2 sp2. इसका मतलब ये एक एलाइलिक ग्रुप हुआ. This is how we determine whether it is allylic or not. Did you understand, students? So we have done the classification about allylic. अब allylic के अंदर यहां पर भी एक और चीज, अगर मेरे पास ऐसा है एक ग्रुप, इसे मैं कहता हूं बेंजाइलिक. बेंजाइलिक के अंदर भी ये भी sp3 कार्बन है.
अब यहां पर भी अगर मैंने ऐसे लिख दिया, if I write like this, it is benzylic. So classification based upon halogen atom present on sp3 carbon can be alkyl, allylic or benzylic. Now I draw over here क्या ये बेंजाइलिक है? क्या ये बेंजाइलिक है? और इज दिस वन benzylic? So tell me, if I mark this as 1, if I mark this as 2, and if I mark this as 3, which one will you call among 1, 2 and 3 as benzylic in nature? It should be sp3. But benzylic means such a group. Where do you find such a group over here, students? We can find such a group over here only in this part of it. This part is the one where we have benzylic system. So we come to know now which is benzylic, which is allylic, which is alkyl, etc. Now attached to sp2 carbon. Attached to sp2 carbon, okay, if it is going to be, then in that case he had said this includes what? Alkyl halides, allylic and benzylic. This is the classification which we have. Now attached to sp2 carbons. Now if I say sp2 carbon, then in that case, see here students, let me go to sp2 carbons now. If I go to sp2 carbon, see here, this is called vinyl group. This is called vinyl group. तो vinyl group का मतलब कैसे होना चाहिए? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये होना चाहिए sp2 कार्बन. तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, CH2 डबल बॉन्ड CHF, इसे कहते हैं वाइनाइल क्लोराइड और वाइनाइल फ्लोराइड. अब ये बताइए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CCl CH3, is it vinylic type or is it not vinylic type? And obviously all my students will say that yes sir, it is vinylic in nature, very similar to this part, vinylic. So we have done the classifications of alkyl halides in a proper manner. What are the classifications we did? Monohalogens, dihalogens, trihalogens, then there geminal, vicinal, terminal, allylic, benzylic, vinylic, and from here we go to alkyl halides. In alkyl halides, the halogen is attached to sp3 carbon. And the general formula over here for this one comes out to be, the general formula here comes out to be here as CnH2n plus 1x. This is the general formula for alkyl halides. The general formula for the alkyl halides is this one. So what is the CnH2n? N can be 1 or 2 or 3 or 4, anything. So what do I have here? CH3X
CH3, CH2, X, CH3, CH2, CH2, X, etc. Is that clear, students? So with this, we stop over here about the alkyl halides first session called as the classification of alkyl halides or haloalkanes. Thank you, students.